साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ 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 साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ Dear devotees, you are about to embark on the greatest journey of your life, a journey to the core of your inner being. Please, all in a low voice, follow the Omkar and let your mind reach a quietude of silence. All together, let us repeat the Pranava.
sit up straight, and in the quietness of your mind, hear the sound of your breathing. Breathe in and out. In, out. Now, open your eyes and see the light in front of you. This is the light of a candle. Gaze intently at the light. Now, feel the light shining in the center of your forehead. Now half close your eyes and feel the light in the center of your forehead. Now, let that light come down your neck to the center of your chest. Imagine a flower, a lotus, opening petal by petal to receive the light. Now the light is resting on the lotus. The lotus disappears, only the light remains. But it is no more the light of the candle. It is a round ball of formless light. It is a light of divinity within you. Feel this light now expand, and feel the light going down your body, into your legs, up to your feet. Feel warmth as the light surges through your limbs. And make this mental vow, O Lord, my legs, touched by the light of your divinity, will always take me only to places of goodness. Feel the light surging upwards, up into your chest, around your shoulders, and down into your arms and fingers. Feel a warmth as this light surges through you. Make this mental vow, O Lord. My arms, touched by the light of your divinity, will only yearn to do what is good. Now feel the light surging upwards into your neck and into your face, into your head. And the light now shines in your eyes. Make a vow. My eyes must yearn to see only what is good. Feel the light now shining in your ears. My ears must yearn to hear only what is good. Feel the light now shining on your lips. My lips must yearn to only speak what is good. Now, feel this light now shining into your whole body. The light illumines the body. In your mind, repeat the words, the light is in me. Now feel the light expand. Expand, and you are now sitting in a ball of light, in a cone of formless light. Let your mind say, the light is within me, I am in the light. Feel a thrill of this light, and now feel this light expanding and filling this entire room with a divine glow. And let this light now go beyond this room, beyond and beyond, spreading ever further to this whole country, and beyond this country, beyond oceans and beyond nations. Let this light flow ever outwards to encompass the whole world. Now, imagine yourself, not your physical body, but an inner being within you, like a gigantic divine form,
sitting on the globe, and the light of your divinity, the light of your love, encompassing the whole world. Stay for a moment, thrilled in that thought. Now, bring into your mind's eye and send your light of love to all the creatures of the world, all the animals and insects, creatures that fly or crawl. All of them are God's creatures. Send your light of love now to those whom you dislike or whom you think dislike you. Send your love, send your light of love to them. The same Atma in you is also in them. Let them feel the radiance of your light. Let them feel the radiance of your love. Now, into your mind's eye, bring those you love, your spouse, children, relations, friends, whoever. Bathe them with the divine glow of your love. Feel oneness with the whole world. Feel at peace with yourself. And now, look inside you. Can you imagine? Do you see a ball of light within you? In this ball of light, bring in the form of the Ishtadeva, the divine being that you love and worship. See this form smiling within you. See this divine form raise his hands in blessing. You have shared your love with the world. Now, receive the blessing and darshan of the divine within. Stay for a moment, thrilled in this thought that you and he are one. Shanti, Shanti, Shanti. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ श्रीभास्कराय विद्महे साईदेवाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ प्रेमात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः सत्यः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. आज्ञा भैया काल की कभी चलायो बंद सब सीखन को कब है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट पुराण की ने जो प्रभु को मिले वो चाहे खोज शब्द मिले राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई बार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए वाहे गुरु नाम जहाँ रहे चढ़े सो तेरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ॐ नमो अरिहन्ताय ॐ नमो सिद्धाय ॐ नमो आर्याय ॐ नमो रजाय नमो ये सब साहुरणं हे सोपं नमो कायो सर्व पाप विनाशयो मंगलानं च
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृणया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवान् गिरित्रतान् कुर्वायुंसि पुरुषं जगतः शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत अद्यवो जगति वक्ता प्रथमो दैव्यो विशक अहिकुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो विक्षागुं हेरयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्वमुपयोराज्ञियोज्या याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशदेषु दे निशीर्षल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्जन्दनुः कपर्तिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आगुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् धृणक्तु विश्वतः अथो येषुभिस्तभारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय
सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अत्रीणात्वा कृमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः कृमीणागुं राजा अप्येषागस्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्राः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशातिका हताः श्वेताभिः सह सर्वे हताः आहरावद्य श्रितस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुय्यमस्य जम्भयोः आदधामि तथा हि तत् खण्फण्मृषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गणपते हरि श्री गणपते हरि
जगमे सर्वं विष्णुमयम् Guru Shri Satya Sai Sadguru Shri Satya Sai
ఆదినారాయణ సాయి నారాయణ ఆదినారాయణ సాయి నారాయణ జయ హరి నారాయణ జయ 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 హరి నారాయణ జయ జయ భవభయభంజన పాపనికందన భవభయభంజన
सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा हरि गोविंदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा पुराण पुरुषा गोविंदा हरि पुण्य चोखा गोविंदा पुराण पुरुषा गोविंदा हरि पुण्य चोखा गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा हरि भगवती गोविंदा भक्तवत्सल गोविंदा हरि भगवती गोविंदा कृष्ण राम गोविंदा हरि राम कृष्ण 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 गोविंदा हरि राम गोविंदा हरि साई 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 कृष्ण गोविंदा गोविंद राम संकीर्तन गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा हरि गोविंदा I
Govinda, Govinda.
యువకులారా, young men and women, మీరు చదివి అనేక విధమైన ఉద్యోగంలో ప్రవేశించి ధనమును సంపాదిస్తున్నారు. you study, take a job and earn money. అయితే ఈ సంపాదించినటువంటి ధనమును ఏ విధంగా మీరు వినియోగిస్తున్నారు? How are you making use of this money that you earn? ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకోవాలి. Everyone should put this question to one's own self. సద్వినియోగం చేస్తున్నానా, దుర్వినియోగం చేస్తున్నానా? Am I using it or misusing it? దీంట్లో సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ లో 4 భాగములు ఉంటున్నాయి. In this respect of sealing on desires, there are 4 డోంట్ aspects. వేస్ట్ ఫుడ్, Don't waste food. డోంట్ వేస్ట్ టైం, Don't waste time. డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ, Don't waste energy. డోంట్ వేస్ట్ జీవితము. Don't waste your life. కనుకనే మన జీవితం లోపల ఫుడ్ను, మనీని మనం వేస్ట్ చేయకూడదు. Therefore, in our life, we should never waste food and money. As an offering towards Bhagwan's 95th birthday, we want to give you an opportunity to utilize your surplus resources for some good and noble purpose that will sanctify your life. In doing so, we can also contribute bulk items of need to Leicester South Food Bank. Leicester South Food Bank helps local people in crisis by providing emergency food supplies. As you may be aware, we have been working closely with the food bank for the last few years. Not only is the food bank supporting families and the individuals, they have also become a hub of support for other food banks and organizations in the community. Since the coronavirus pandemic, the food bank has seen an increase in demand by 351%. So, how can you get involved? You can get involved by putting into practice one of the 9 points code of conduct as mentioned by Bhagwan himself. Practice the principles of sealing on desires, consciously and continuously striving to eliminate the tendency to waste time, money, food, energy, and utilizing any savings thereby generated for the service of mankind. You may have heard of sealing on desires mentioned previously, but what is it? Bhagwan says, the Sealing on Desires program has been proposed so that man does not waste anything in the areas of food, money, time, or energy. If that's got you inspired and you would like to participate in this 95th birthday offering by 1. actively practicing sealing on desires, and 2. in turn helping the food bank, head over to the website link shown on screen for practical tips to help get you started and further details. Remember, the spirit of sacrifice and detachment is what matters. Jai Sai Ram. श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्ममस तू योग शक्ति तू पिता प्रभु तू रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीमताओ तू रहीमताओ तू वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग श्री
भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक पतिमहेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातापिता गुरुदेवं वरियन्तयुनीवे स्वामी वरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप जय श्री साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती मंगल आरती मंगल गिरिधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ